आ गया है आपका दोस्त राकेश इलेक्ट्रीशियन आपको लिए एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, जो कि आज आपको बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि अपन घर में देखते हैं, यूजुअली अपन जो है फैन के कनेक्शन करते हैं तो उसके लिए अपन सिंगल स्विच लगाते हैं। जैसे अपन घर के अंदर हैं, फैन अपने बाहर लगा हुआ है, आपको अगर इन केस मान लीजिए अपन फैन जो है चल रहा है और अपन बाहर नहीं जाना चाहते उसको बंद करने के लिए, तो आप एक फैन को दो जगह से आप उसको ऑपरेट करा सकते हो और बंद कर सकते हो। तो आगे मैंने दिखाया है, मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से बंद करना है, चालू करना है, कैसे कनेक्शन होगा उसका, किस तरीके से उसको सारा डायग्राम बताया मैंने, उसको सब कुछ बताया मैंने स्टेप बाय स्टेप। आप जरूर देखना भूलिएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप मान लीजिए एक ही जगह से आप एक फैन को आप 3 जगह 4 जगह जितना जगह चाहो उतनी जगह से आप उस सर्किट को देख के आप उसको कवर कर सकते हो कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितना कनेक्शन करना है, कैसे कनेक्शन करना है, कि कौन सा स्विच यूज़ करना है, उसके लिए क्या रेगुलेटर लगाना है नहीं लगाना है, सारी चीज़ें उसमें मैंने कवर की हुई है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमेशा आप देखते रहें। दोस्तों आगे मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल देखना ना भूलिएगा, प्लीज़ सी। Hi guys, today we will talk about ceiling fan wiring to switches and regulators. Today we are going to learn how to wire a ceiling fan with 2 separate switches and fan regulator. This setup is very useful in homes and offices where you want convenient control of the fan speed from different locations. In this wiring diagram, we have one ceiling fan as the load, 2 switches, one of each side for on and off control, 2 fan regulator, one in each size for 2 fan regulator which allow adjust the fan speed, power supply wires, phase B in red and neutral in black. The wiring starts from the power supply. The neutral wire black is directly connected to the fan. The phase wire red is routed through the switches and regulators before reaching the fan. Each switch acts as controller for the fan. When either switch is turned on, electricity flows from the phase wire, passes through the connected regulator, and finally reaches the fan motor. When both switches are off, the fan will stop. Both regulators are connected in series with their switches. Their job is to control the speed of the fan by increasing or decreasing the resistance. They adjust the voltage supplied to the fan, which in turn it changed its speed. So here's how it works. Power flows from the phase line into the selected switch. From the switch, current flows through the regulator. The regulator adjusts the fan speed. Finally, current flows to the fan motor and completes the circuit with the neutral wire. This wiring system allows you to control the fan from different locations, which is convenient in large rooms or halls. Adjust the speed of the fan independently using either regulator. Ensure flexibility and comfort in daily use. So that's how a ceiling fan is wired
with 2 switches and 2 regulators. Always remember, if you are doing this wiring at home, flow safety precautions on here qualified electrician. Thanks.